Tonight, we have a very special performance by a good friend of mine. He always calls me out, even though I feel I'm a terrible host, but he says that, no, you must come, and he insists on me hosting him. So Kashif Zafar is actually a student from Napa, and he graduated under the guidance of Ustad Rauf Nasir Sami, and Uruj Nasir Sami in the Delhi Gharana. And tonight, you're going to get something that's not Qawwali, but Khayal. Kashif is also a performer in folk music, in Qawwali, in Ghazal, in fusion, in pop. But tonight is a performance on Khayal, and Khayal Gayaki in particular. So a little bit about Kashif. Kashif in 2008, after graduating, he actually wanted to give back in the music education. And he started the Tansen Academy of Performing Arts in 2008. And from there, he's been teaching Qawwali and Ghazal and Khayal and all these things to a new batch of students, a new generation. And it's quite interesting because when I think of Kashif and his journey, I'm reminded of a really favorite book of mine by Data Ganj Bakhsh, Kashf al-Mahjub. I don't know if many of you have read it or not, but in that book, they talk about Sama. And Data Ganj Bakhsh is 17 years old, and he's speaking like, I was traveling somewhere in Afghanistan, and I came to a very renowned peer, an Ustad. And he looked at me, and he was so excited that he said, ask me anything and you'll have it. And he said at that time I was 17 and I wanted to listen to Qawwali. So मैंने Qawwali की दरख्वास्त की. तो फिर उस्ताद ने जो है वो Qawwali का इंतज़ाम किया and all that. After सुर के बाद, and उस्ताद told me that देखें Qawwali एक चीज़ है जो आपको एक मकाम तक पहुंचा सकती है. लेकिन उस मकाम से आगे अगर बढ़ना है तो और भी चीज़ें लाज़मी हैं. And I believe Kashif is a living example of what that means, is because not only is he lost within the Qawwali, but he has went and spread this out to teach the younger generation. And he started a project in 2016 called the Ustad Shagid Center. And Ustad Shagid Center in Maimangot and Gadab Town, where he has engaged the underprivileged children, opened a school with them. Not only is he teaching them and giving them free education and food and ration, but also teaching them this tradition that we're seeing day by day lost. And he's keeping it revived in the most underprivileged communities. And I think that's an amazing journey. And he's been working with the German consulate to promote Sufi music and the peace of it throughout the world, and the image of Pakistan in a positive context. He also has established a record label, T Records, and has an international record with Jugni, and a very famous also student of his, Noor Sattar. She's not with us this evening, but usually she comes to Pakistan a lot. So without further ado, I'd like to invite Kashif to actually give you a more insight on what Khayal Gayaki and what Khayal is. And tonight, I don't know, most of you might not know what Khayal is. It's different from Qawwali, and I think he'll add some insight to that. So Kashif, without further ado, would you join us? वैसे तो इस पे बात करने के लिए 2 घंटे भी कम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि हम ख्याल पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर सकें, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में हम ज़रूर बता सकते हैं कि ख्याल असल में है क्या. कोई एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है ख्याल की. आपका अपना ख्याल है, हमारा अपना ख्याल है, सबके अपने अपने ख्याल हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म है. मैं एक लाइन में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि एक लाइन में कोई ये बता सके कि ख्याल क्या है, अनलेस कि आप इस आर्ट फॉर्म को ट्राई करें. जब आप इसे ट्राई करते हैं और जब आप इसे गाते हैं, तब आपको पता चलता है कि गाने में हर चीज़ ही ख्याल है. आपके सामने कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत कुछ होता है. आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, नोट्स विजुलाइज कर रहे होते हैं, ये भी ख्याल है.
लेकिन अगर हम सोचें कि ख़याल हज़रत अमीर खुसरो ने इजाद किया तो उसकी वजह क्या थी, दो बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस हैं इसके ख़याल को इजाद करने के। एक तो अल्लाह की तारीफ़, जो कि इसका मेन पर्पस है ख़याल का, कि अपने आप को कनेक्ट करना टू द अलमाइटी। और एक और पर्पस जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें है एडवाइस। इंसान की बेटरमेंट के लिए एक मैसेज है इस म्यूज़िक में। और फिर राग, अगर हम ख़याल के बाद फौरी तौर पर आएंगे तो कि किस राग में हमें अगर हम ख़याल पेश कर रहे हैं तो उस राग के हिसाब से, और जो अल्फाज हमारे पास बंदिश में हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन हम एक ऐसा सेशन इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे जिसमें हम सिर्फ ख़याल के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि ये आर्ट फॉर्म यूथ में पॉपुलर हो। आपके सामने मैं हज़रत अमीर खुसरो की इजाद है पूर्बी राग, जो कि इस वक्त का राग भी है। सबसे पहले वो पेश कर रहा हूँ। मोरी नैया पार करोगे हजरत निजामुद्दीन औलिया, अलगदास की टूटी नवरिया, तुम बिन कौन खिवैया। और जो कुछ भी मैं आपके सामने इस वक्त सुना रहा हूँ या पेश कर रहा हूँ, ये मैं नहीं पेश कर सकता, नहीं सुना सकता। जो क्रेडिट अगर मेरे गाने में मैं कुछ भी अच्छा अगर आपको लगे, वो सारा क्रेडिट मेरे उस्ताद का है, उस्ताद रऊफ़ नसीर सामी और उरूज नसीर सामी। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आपको ये सुना नहीं सकता था।
da 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 ba ma ba ga ma ga re ga ma ba ma ga ma da ba ma ba ga ma ga re ga ma ba ma ga ma da ba da ni da sa da ba ma ba da ba ma ba ga ma ga re ga ma ba ma ga ma da ba ma ba da ba ma ba ga ma ga re ma ga ma 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 ga re ga ma 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 ga ma 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 ga
ah